Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing work, energy and power. Work हमने define किया, it's a product of force and displacement. And work is said to be done when force acting on a body results in its displacement. ठीक है? And every body can work only when it is possessing some kind of energy. Work is done at the cost of energy. हम ये कह सकते हैं that work is done by a body at the cost of some energy. Without energy, a body cannot do any kind of work. That means without any energy, without any form of energy, the disposition of the body cannot be changed. That is why work cannot be done without having any source of energy behind it. So more the energy of a body, more it can do the work. Less the energy possessed by the body, less work can be done by the body. And what is energy? Then energy by itself defines its meaning as it is ability to do work. तो कोई बॉडी कचा काम करे यानी कोता फोर्स हेक्स कुन पे एक्सर्ट करित तम फोर्स सहित कोता डिस्प्लेस हेक्स ऑब्जेक्ट गछित ठीक का बॉडी कोता हे कुन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करित that is called its work और तथ मस कोता आसी वर्क करने कैपेसिटी that is called energy. वो एनर्जी हमने डिफाइन की इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन बॉडी टू डू सम वर्क. किसी बॉडी में एक सलाहियत कि वो कोई भी काम कर सके ठीक that ability of that body or the capacity of that body to do some kind of work is called energy. There are various forms of energy like chemical energy जो हमने already आपको types of energy पिछले वीडियो में already discuss किए हैं ठीक. Kinetic energy, chemical energy, electric energy and mechanical energy. The most important among them, even though they are all important forms of energy, but the important in respect to your syllabus is mechanical energy. Mechanical energy is energy possessed by a body due to its motion or due to its position. किसी बॉडी में वर्क करने की सलाहियत पैदा होती है when it is in motion. यानी एक रनिंग कार कैन हिट हार्ड a body at rest or a body in motion. यानी पकवी गाड़ी चीज खोसन कि खुदा न खास्त अमुक टक्कर गछने उन गाड़ी ते के अमुक टक्कर गछने उन इंसान ते के कैज because when the car is running at that time it is possessing the energy to do work. It is possessing the energy that it can displace the body. इसे कारण हवा वुनकस बिल्कुल साइलेंट ठीक बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है तो इस वक्त इसके अंदर बहुत कम एनर्जी है टू डू वर्क. लेकिन यही हवा जब रफ्तार पकड़ता है तब हम सब लोग अंदर ही अंदर एक डर पैदा होता है. क्यों? At that time we realize that this air is having ability to do work. What kind of work? It can erode the roof of the house. ये हमें भी डिस्प्लेस कर सकता है, हमारे मकानों को डिस्प्लेस कर सकता है, हमारी गाड़ियों को डिस्प्लेस कर सकता है, दरख्तों को उखाड़ सकते हैं. At that time जो इसके अंदर वो एनर्जी आ गई, जो काम करने की सलाहियत आ गई, it is because of its motion. ठीक. इसी तरह कोई चीज़ अगर किसी हाइट पे रखा जाए जैसे डैम बनाते हैं ना डैम आपको वही एग्जांपल देंगे जो आपके सिलेबस में है. सिलेबस में मीन्स जो आपको आने वाले दिनों में पढ़ने हैं जियोग्राफी में या साइंस में. डैम होता है ना वो रिजर्वायर ऑफ वाटर दैट इज कंस्ट्रक्टेड एट सम हाइट. क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके फ़ायदे आप खुद पढ़ेंगे. लेकिन ये डैम जो है ना डैम इसका डिसएडवांटेज इसका ये है इट ऑलवेज पोजेस थ्रेट टू द अंडरलाइंग एरियाज. क्योंकि डैम जो बनाया जाता है वो ऊंचाई पे बनाया जाता है फिर अंडरलाइंग एरिया जो होते हैं उनके लिए हमेशा एक खतरा रहता है. किस बात का खतरा? कि वाटर जो ये हाइट पे है इस हाइट पे होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी है. इस हाइट पे होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी है. अगर खुदा न खास्ता कभी ये डैम फट गया इसकी कोई दीवार फट गई तो ये जो वाटर इतने ऊंचाई से नीचे आएगा इट कैन डू वर्क, इट कैन डू अ लार्ज वर्क. तो हमें ये जहन में ऑलरेडी होता है कि ये कैसा काम है करे यानी ये सैलाब बनकर हमारे मकानों को अपने साथ बहा कर ले जा सकते हैं. एट दैट टाइम जो इस पानी के अंदर जो एनर्जी है इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. वैसे भी डेली लाइफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है तो हम इसके नीचे बैठने से डरते हैं कि अगर खुदा न खास्त ये वसित पे हो यानी अगर सडनली ये नीचे गिरता है तो ये हमें हार्म कर सकते हैं. दैट मीन्स in the language of physics we can say that it is having ability to do work. Why? Because of its height. It is possessing the energy to do work.
So this mechanical energy is of two types: energy possessed by a body due to its motion, and energy possessed by a body due to its position. Today we are going to discuss the energy possessed by a body due to its motion, which is called the kinetic energy. So what is kinetic energy? Simple words: energy possessed by a body, energy possessed by a body due to its motion. Due to its motion. Any body that is in the state of motion is having ability to do work. आप जहन में जो भी लाइए, रनिंग वाटर जो होता है ना, उसके अंदर एक सलाहियत होती है काम करने की. उससे हम लॉग्स ऑफ वुड एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं. उस पर नाव चलाने आसान हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर. रनिंग आयर यानी मूविंग आयर हैज एबिलिटी टू डू सम वर्क. ठीक, जो गेंद होती हैं, ठीक, जब हम उसमें फोर्स एक्ट करते हैं, जब उसमें वेलोसिटी पैदा होती है, एट दैट टाइम इट इज़ हैविंग एबिलिटी टू डू वर्क. अगर ये बैट्समैन के सर पे लग जाती हैं तो ये बैट्समैन को भी गिरा सकती हैं. ये विकेट पे लग जाएगी तो विकेट को उखाड़ कर फेंक सकती हैं. दो दैट मीन्स इसके अंदर जो एबिलिटी टू डू वर्क है यानी एनर्जी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट इज मोशन. तो हर एक मूविंग बॉडी जो कि आपके जहन में आएगी इस टाइम, every moving body is possessing energy, and the energy possessed that by moving body due to its motion is called the kinetic energy. More the kinetic energy, that means more the velocity of the body, more will be its ability to do work, more will be the energy possessed by the body. एक और मिसाल आपको इस चीज़ समझाने के लिए देता हूँ. एक गोली जो मैं कल भी बता रहा था, बंदूक की गोली, वो 50 ग्राम वेट की होती हैं, बहुत कम वजन होता है. अगर हम हाथ से इसको किसी बॉडी पे चलाते हैं तो हार्डली इट मैटर्स, ये मामूली सा जख्म देगी लेकिन मारने के चांसेस बहुत कम हैं. लेकिन यही गोली जब बंदूक से निकलती है तो इंसान या किसी बॉडी के आर पार चली जाती हैं. हाउ? बिकॉज एट दैट टाइम इट इज़ हैविंग मोर एनर्जी. अब ये एनर्जी कहाँ से आ गई इसमें? ये तो गोली, एक तो 50 ग्राम की गोली, तब भी 50 ग्राम की गोली है, हाथ में थी तो तब भी इतनी गोली थी. अब इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? अमिस कत आई यीज एनर्जी? ये एनर्जी गई अत मज पद, अत बॉडी मज पेनिट्रेट गसनच एनर्जी गई अत मज पद बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. अब आ गई बात समझ? दिस एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. ठीक? Now kinetic energy can be expressed in the form of a relation or in the form of a formula. We can derive the equation. We can write down this kinetic energy in the form of an equation. The equation for the calculation of this kinetic energy is, it is 1/2 of mv square. What is kinetic energy equal to? Kinetic energy, an energy possessed by a body due to its motion, is equal to 1/2 of mv square. 1/2 of mv square means kinetic energy is directly proportional to mass of the body. ये दो चीज़ों पे डिपेंड है. And it is directly proportional to square of the velocity of the body. That means we can say it is directly proportional to velocity of the body. तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड है. वन, द मास ऑफ द बॉडी, सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. जैसे एक स्टोन हम लेंगे, स्टोन अगर इसका मास फॉर एग्जांपल 10 kg है स्टोन, लेकिन ये रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है, इट इज काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज मास इनटू 0 इज इक्वल टू 0. 10 into 0 is equal to 0. That means at that time kinetic energy is 0 when body is in the state of rest. ये याद रखना आपको. काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो उस बॉडी में होती है, जो उस बॉडी के अंदर पैदा होती है, जो बॉडी मोशन में होती है, और जो मोशन की वजह से ही इस बॉडी में एनर्जी पैदा होती है. More the motion of the body, यानी velocity of the body, more will be the kinetic energy. Less the velocity of the body, less will be the kinetic energy. Less the mass of the body, less will be the kinetic energy. More the mass of the body, more will be the kinetic energy. Greater the mass and velocity of the body, अगर दोनों में आसान ज़्यादा, greater will be its kinetic energy. दोनों में आसान कम, less will be the kinetic energy. जैसे moving train और moving bus. ठीक, ट्रेन का वजन ज़्यादा होता है. अगर ट्रेन 30 किलोमीटर रफ्तार से भी चलेगी और एक बस भी उसी रफ्तार से चलती है, तो आपको क्या लगता है किस में एनर्जी ज़्यादा है? ठीक, किस में? अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी रखते हैं, किस पे ज़्यादा फोर्स एक्ट होगा? किसको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, किसकी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी? वही गाड़ी जो ट्रेन के सामने आएगी, क्योंकि स्पीड तो बराबर है लेकिन मास डिफरेंस है. यहाँ पर स्पीड अगर दोनों की बराबर है लेकिन ट्रेन का मास ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. तो आपको यह याद रखना है दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टू physical factors of the object. One is mass and another is velocity.
that is directly proportional to the mass. Increase in the mass increases kinetic energy, increase in the velocity increases kinetic energy, decrease in the velocity decreases kinetic energy. ठीक है, ये दोनों से डिपेंड है. This is its equation. Now let's derive. How is kinetic energy equal to half of mv square? How can we derive this relation or equation for kinetic energy? ये हम derive करते हैं. इसमें पूरा बोर्ड हासिल होगा. तो क्या करना है हमें? derive the equation for kinetic energy. derive the equation. जो अभी मैंने कहा equation क्या है? that kinetic energy is equal to 1/2 of mv square और half of mv square. ये equation हमें derive करनी है. अब कैसे derive करते हैं? Let's consider a body. Consider a body of mass m. Of mass m. ठीक, moving with initial velocity. Initial velocity u. यहाँ लिखो, जरूरी नहीं है moving, having initial velocity u. ये u कुछ भी हो सकता है. Having initial velocity u. शाबाश. Let a force F acts on the body. आप बताइए, पहले आपको ये समझना है. A body of mass m, velocity u. When a force F is applied on the body in the direction of motion. If force F is applied on the body in the direction of motion, क्या इसका mass change होगा? नहीं. तेल क्या गया change? Mass रोज mass ही. Velocity गया change. Velocity गया change. आ गई बात समझ? Let a force F acts on the body in the direction of its displacement. In the direction of its displacement. आप देखना कि हम क्या लिख रहे हैं. ये मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है. We have considered a body of mass m having initial velocity u. Let a force F acts on the body in the direction of its displacement. ठीक, हो गया यहाँ तक क्लियर? हम लिखेंगे therefore जब फोर्स एक्ट होगा व्हाट विल हैपन. ये लिख कोई बॉडी पे क्या लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दैट मींस डिस्प्लेस भी होती हैं. व्हेन ए फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम वर्क इज सेड टू बी डन. गो ये डिस्प्लेसमेंट गश, दैट मींस वर्क इज डन. देयरफॉर वर्क डन ऑन द बॉडी तो इस बॉडी पे काम हो गया. वर्क डन ऑन द बॉडी दैट इज W is equal to, ये मैं नीचे लिखूं, W is equal to शाबाश F into S, where F is the force and S is the displacement. क्योंकि ये हमने वर्क की क्या नाम है उस फार्मूला और डेफिनेशन से ऑलरेडी ये डिराइव की है. Let work done is equal F into S, let it be equation first. आ गई बात समझ? शाबाश. अब आप बताइए the work done, what will happen by this work done? इससे क्या होगा? Velocity of the body will get change. इस work done से क्या होगा? It will cause the work done will cause, what will it cause? It will cause change in velocity of the body. Change in velocity. कि mass कैसे change? Mass तो change नहीं होगा. फोर्स अप्लाई करने से मास चेंज नहीं होगा. फिर क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक, लेट v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर वर्क डन. ठीक, लेट v इज द फाइनल वेलोसिटी attained by the body. ये कंस्ट्रक्शन है. जो हमें दिमाग में आता है वही हमें लिखना है कि फोर्स ऑफ बॉडी दी वेलोसिटी का चेंज.
अगर velocity is u, suppose at velocity change goes by v. Let v is the final velocity attained by the body. And velocity will change from u to v. What is change in velocity called? शाबाश बेटा, क्योंकि फिजिक्स पूरी याद रखनी है स्टार्ट से एंड, तब जाकर पूरी फिजिक्स समझ आती है. What is change in velocity called? Acceleration. And let a, small a, be the acceleration. Be the acceleration, because when there is exchange in velocity, that is called acceleration. Let a be the acceleration of the body. क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी होगी, a is acceleration of the body. अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? S हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट को होता गई. We are given initial velocity b, final velocity b, ठीक. Acceleration b. Initial velocity is u, final velocity is v, acceleration is a. हम यहाँ पे लिखते हैं from equation third of motion. From equation third of motion we have. बताइए बेटा क्या है equation third? v square minus u square is equal to 2 into a into s. और शाबाश, s थावन अति s करूँ 2a दिवन दिवार क्या बने divide by ये v square minus u square divided by 2a is equal to s. ठीक है, आ गई बात समझ? Let it is equation second. द्रवास s वैल्यू, शाबाश. Also, क्योंकि अब f निकालेंगे, also from second law of motion. Second law of motion. Also from second law of motion we have. शाबाश, second law क्या कहता है? Force F is equal to mass into acceleration. Force F is equal to mass into acceleration. शाबाश. That it is equation third. वो F की वैल्यू तो द्रावस, F की वैल्यू तो द्रावस, S की वैल्यू तो द्रावस. Now substitute the value of equation second and equation third in equation first. ये आपने ऑलरेडी लोड किया है, वीडियो में मौजूद है, इसलिए इसको रब करने में परेशानी नहीं है. Substitute value of equation first, equation second and third in equation first we get. What is equation first? W is equal to F into S. F के बदले क्या लिखेंगे हम? M into A. शाबाश. S के बदले क्या लिखेंगे? V square minus U square divided by 2 into A. 2 into A. A and A gets cancelled. W is equal to M. शाबाश. It is mass into V square minus M U square divided by 2. Whole divided by 2. यही आएगा, ठीक है. और it can be written as W is equal to 1/2 of, इस करो 1 कम, इस करो 2 कम, 1/2 of M, 1/2 of M into V square minus U square. यही आएगा 1/2 of M into V square minus U square. आप देखो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ना मैंने कुछ इरेडिकेट किया, ठीक. न यहाँ से कुछ लूज हुआ, न यहाँ पे कुछ गेन हुआ. M भी निकाला मैंने कॉमन, दिस इज M कॉमन, ठीक. 1 शीशी का था 1 कॉमन करूँ, और यहाँ से 2 निकाला कॉमन, दिस इज हाफ ऑफ M V square minus U square. What is this? It is work done. It is work done. हाँ, suppose if we consider as though one is initial velocity u, if the body is supposed to have initial velocity 0, अगर ये body आसे rest मस, अगर body has velocity आसे, so first रखोस, if the body initially was in the state of rest, or if the body starts from rest, अगर गोडनिच velocity आसे at 0, that means body rest, then u is equal to 0. Tell क्या u is equal to 0 at that time, शाबाश. Then
तेल क्या बन ये W इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये लीनियर 0 स्क्वायर से 0 mv स्क्वायर W is equal to half of mv square. Shabash. What it is work done? Work done is equal to half of mv square. When the initial velocity of the body, when the body was in the state of rest, when work is done on the body which is in the state of rest. और जब उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स उसके उस डिस्प्लेसमेंट होने से उसके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, उस डिस्प्लेसमेंट होने से उसके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे ये समझना है. देखो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. दिस बॉडी इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 0. ठीक, इसका जो मोमेंटम है दैट इज 0, मास बराबर. अब इसमें जब फोर्स एक्ट होता है, if it gets displaced, then work is done. If it gets displaced, work is done. ठीक है, ये आपको पता है. लेकिन जब ये डिस्प्लेस होती है तो इसके अंदर क्या आती है? मोशन. जब ये डिस्प्लेस होती है तो इसके अंदर क्या आती है? मोशन. बिकॉज व्हेन इट इज वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड फ्रॉम u to v, दैट मीन्स इसके अंदर मोशन आ गई, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई. डिस्प्लेसमेंट मीन्स मोशन आ गई. और जब इसके अंदर मोशन आ गई तो अभी मैं कह रहा था व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, इसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, उस मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है. अब इस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी पैदा हो गई, हमें ये दैट इज इक्वल टू द वर्क डन कि एम कसा काम कर, यानी अथ मज कसा गई मोशन पद, अथ मज कसा गई वेलोसिटी चेंज, u पे v तक मास रोज सेम. गो वर्क डन से क्या गई अथ मज पद? काइनेटिक एनर्जी. कसा काइनेटिक एनर्जी गई अथ मज पद, यानी कसा मोशन गई अथ मज पद, दैट इज इक्वल टू वर्क डन. दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स energy possessed by a body due to its motion. गो इस आदमी से मोशन पद गई गई बिकॉज ऑफ द वर्क डन. अगर नहीं वर्क डन अथ पे गई कि अथ पे मोशन की, और ये v v कोता आस, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन. गो ये काइनेटिक एनर्जी यानी अथ रफ्तार कस आस अथ बॉडी, ये डिपेंड वर्क डनस पे. दैट मीन्स जिस अथ में मोशन पद गई, मोशन से एनर्जी पद गई, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन. सो द वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी अटेन्ड बाय द बॉडी. द वर्क डन is equal to kinetic energy attained by the body. क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, और कोई भी एनर्जी जो वेलोसिटी की वजह से पैदा होती है किसी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. और इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन. इसलिए वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दे आर इक्वल. वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज kinetic energy because work done is equal to kinetic energy. Yani W, that is W is equal to kinetic energy, or kinetic energy is equal to 1/2 of mv square. Or kinetic energy is equal to 1/2 of mv square. This is how we can derive this equation for the motion of a body, energy of a body attained by its motion, that is called the kinetic energy. ठीक, यू जस्ट ट्राई इट, अंडरस्टैंड इट. अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे SMS करके बता सकते हैं, आई विल रिपीट इट. वैसे इसको समझने के लिए अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो ये समझना आसान है, इसमें कोई दिक्कत रहने की बात ही नहीं है. सी यू टुमारो अगेन, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम एट योर होम. खुदा हाफिज़.